Mole has how many number of atoms or molecules? 6.03 into 10 to the power 20. 23, right? This is the number of particles or whatever, number of molecules, number of atoms, whatever, okay? And this is also called what number? Avogadro number. Avogadro's number, okay? And right, this is Na. Okay. Yeah, Avogadro's number, it is also called N subscript A. Fine. Okay. Now let's get to the inside of the chapter. Okay. So the chapter is called Kinetic Theory of Gases. And you also need to open this assignment, which is there on my website. It is .com, and then you need to go to courses, and then you need to go to your 11th page, and then you need to go to click on physics, and then when you go and click on physics, then you will get scroll down, you will get KTG, Kinetic Theory of Gases. Okay, fine. You should open it right now in a different browser. Okay, different tab. Okay, done. Okay, now I'm going to teach. I'm starting this chapter. Okay, and we will do this assignment also parallelly. Fine. Okay. One second. Okay. So there are a few concepts. Okay. Okay. This assignment, you should be able to do it if you read the NCERT. You read NCERT line by line, you should be able to do this assignment. Okay. Okay, fine. Now let's go to concepts. Okay. Okay. First, you have to understand that initially it was thought that matter is made, it is continuous. You have already read it, no? Continuous matlab, that it is not made of any subatomic particles. Any matter is continuous. And then there are theories given by different scientists who said that atoms is not continuous. In fact, it is made up of undivided particles. Keep writing, okay? Undivided particles. And then people call them atoms. Okay. Okay. So, the most famous theory of this is by John Dalton. Okay. Sorry, John Dalton. And uska theory ka naam hai atomic theory. Okay, atomic theory. John Dalton's atomic theory. What atomic theory says is that there are two laws in this. There are two laws. So there are two laws. Okay, the first law and second law. The first law says that any given compound has fixed proportion by mass of its constituents. You have read it in class 10th. Okay, chemistry mein pehle chapter mein tha ye. I'll revise it. Keep any compound has a fixed ratio of its constituent atoms. For example, if you take H2O, H2O का हाइड्रोजन का मास कितना होता है? कितना होता है? 1. और ऑक्सीजन का 16 होता है ना? तो H2O में 2 हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन का मास कितना है? हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो फिक्स्ड मतलब दैट मीन्स व्हाट इज द हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो? Mass by mass 1828 by mass, right? So if you take a water molecule from any source, lake, pond, rivers, sea, water, from wherever, this ratio is going to remain same. The basic reason is because the formula is going to remain same, right? Understood? It will not be so that some water is H2O, some water is H3O, some water is H2.54 as a name. All water is H2. Simple first law. The second law is that when two elements form more than one compound, for a fixed of one element, the mass of element ratio of small integers. Okay. The next thing is, it's important. It may appear same as first law. It says, if you say H2O, okay, by mass बोला for a fixed mass, okay. What is the mass of hydrogen again? It's 2. What is the mass of oxygen again? 16. The ratio is 1:8. The first law says that whatever is the source, it is source independent, right? First law says that it is source independent. मतलब कहीं से भी water लो, the ratio is going to remain 1:8. The second law says that the ratio, whatever ratio you're getting, should be integer only. Integers only, okay? Small integers. It can't be that it is 1:3.5. ऐसा नहीं हो सकता. Okay? ऐसा नहीं हो सकता. ठीक? It is always integers. Understood? So there's all that law of constant proportion, multiple proportion, and all that, right? It is called by that name. Yeah. I think constant proportion and multiple proportion, law of constant Yeah. proportion. I think this should be called law of constant proportion, right? Yeah, and that one's called law of Law of multiple proportions. Okay. The next thing is you have to read on your own these 3 laws. I hope you have done them already. And write, okay. This is the NCRT. Okay, so you have to read this Gay-Lussac's law, Avogadro law, okay, and Boyle's law. I think we have covered them already while discussing thermodynamics. Okay, the thing is, from all these 3 laws, there is one equation comes. The equation is PV equal to nRT. We will talk of it later. Okay. Now see the basic difference. The next thing is so we studied how the matter is made up of atoms. They are undivided and they are in simple ratios, etc., etc. Now, in different forms of matter, there are 3 different forms. Okay? Solid, liquid, gas. Solid, liquid, and gas. Okay? Fine. In solids, liquids, and what is the basic difference between them? Yes, intermolecular spaces is the basic difference. Okay, so intermolecular spacing. Intermolecular spacing. Okay, now, but this is not the only one, because see, intermolecular spacing is about the size. देखो पहले तो लिख लो, the size of atom is approximately size of an atom. पहले तो लिखो, ठीक है? Side में लिखो size of atom. Size of atom is approximately 10 power minus 10 meter. It's 10 की power minus 10 meter. It is also called 1 angstrom. Okay. Size of an atom is approximately 1 angstrom. ठीक, एक atom का size. जो spacing होती है in solids, it is approximately few angstrom, and in liquids also it is few angstrom. Okay. Understood? The spacing between solid and liquid, I mean, the spacing between 2 atoms in a solid is few angstrom. For example, 2 angstrom, 3 angstrom, 4 angstrom. Okay. And in liquid also it is similar. So therefore, intermolecular spacing is not the only one. Okay. And attraction भी होता है.
ठीक है, and attraction. What is the attraction between the atoms? For example, in solid, देखो solid और liquid, अच्छा गैस में जो स्पेसिंग है वो कितनी है? गैस में जो स्पेसिंग है वो ऐसा डिस्टेंस आर इन टेंस ऑफ एंगस्ट्रॉम. हाँ, इट इज इन टेंस ऑफ एंगस्ट्रॉम, मतलब ऐसा होगा 50 एंगस्ट्रॉम, 60 एंगस्ट्रॉम. ओके, सो इट इज लाइक, इसमें सिंगल डिजिट एंगस्ट्रॉम है, जैसे 1 to 10 एंगस्ट्रॉम है, 1 to 10 एंगस्ट्रॉम है. और इसमें क्या है? नेक्स्ट पावर मतलब फ्रॉम 10 to 100. ठीक है, 10 to 100 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो स्पेसिंग में ओनली गैस इज डिफरेंट, सॉलिड लिक्विड इज सेम. व्हाट इज डिफरेंट इन सॉलिड लिक्विड इज द अट्रैक्शन. सो इसमें विच विल हैव हाई अट्रैक्शन? सॉलिड हाई अट्रैक्शन. ओके, हाई अट्रैक्शन. ठीक है, इसमें लोअर अट्रैक्शन, लोअर, और इसमें लोएस्ट. ठीक है, फाइन. ठीक है, अंडरस्टूड नो? Sir, so in terms of intermolecular space, solid and liquids are similar. Yeah, similar, yes. But in terms of properties, liquid and gases exhibit Correct. Physical same properties. properties. That's why we call them Physical fluids. Yeah. In fact, we have studied in chemical properties, oh, some fluids chapter, they are specifically called fluids, right? Both of these. And दोनों में same equation use होती है in fluids, right? That's all. Because the flow properties are same for liquids and gases. So I will edit that statement to, you said properties are same. I said flow properties are same. Okay. Okay. Fine. Now, there is one very basic difference between why are we studying this kinetic theory of gases? There is no kinetic theory of solids or kinetic theory of liquid. Kyunki the main difference which is in this chapter is very, very important difference is gas molecules don't interact with each other. Gas molecules, one gas molecule will not know the presence of another gas molecule. Okay, which is not the case in solids and liquids. Okay, solid mein they're like everything is tightly arranged in a lattice. Okay, fine. And in liquids, they are not tightly arranged, but still they are attracted to each other. Okay, so this attraction is very high. Okay, in gas molecule, one molecule does not know the existence of another molecule. ठीक है, इसको पता नहीं है, वन को नहीं पता टू कहाँ है, पर उससे there is no interaction between 1 and 2, 2 and 1, 2 and 3, 3 and 4. There is no interaction between any two gas molecules. Okay, fine. And this is the properties of a real, ideal gas. So this is ideal gas. Anti-clockwise two times anti-clockwise. Yeah, and every light on, switch light on. Thank you. Understood? Write this statement. Gas molecules don't interact with each other. They don't interact with each other. Okay? Look, in solids and liquids, the closeness makes the interatomic force important. Force important. Okay. Tick. This force has a long range attraction and a short range repulsion. This force has a long range attraction and a short range repulsion. Now, what is the meaning of this statement is, if two solid or liquid molecules or atoms are far away in the sense, in their range far away. Unka range to 1 to 10 angstrom hi hai. Usi mein agar if there are 9 angstrom, the force will be attractive. Thik? When they come closer to each other, this force becomes a repulsive force. Okay. So, okay. In liquid is also same, but in gases they are so far off. It's the distance so far off that these interatomic forces do not matter. Okay, they don't play a vital role. Anything. Okay. Okay. Then okay. Now we will write the basic equation. You have to
understand this. PV is equal to nRT. Okay, PV is equal to nRT. Right, P is the pressure. Don't just write pressure, write whatever I'm writing. Okay, pressure exerted by gas molecules oblique atoms on the vessel or on the walls of the vessel. On the walls of the vessel in which they are kept. Now, in this chapter, you don't have to just understand that piece pressure. You have to understand this whole thing. If you understand this whole thing, then only you'll get the concept of this chapter. Okay. Scroll up. Okay. There. Simple 10th grade. You listen, you will not miss anything. Okay. Listen. So, ये पूरा लिखो, write this full. Don't write P as just pressure, write this thing full. Pressure exerted by gas molecules, oblique atoms on the walls of the vessel in which they are kept. Okay. Okay. What is V? V, what is V? Volume. किसका volume? Gas. Volume of the gas नहीं है, वही गलत है. Oh, in the container. हाँ. V लिखो, V volume of the container in which the gas is kept. इसका एक और better definition भी है. The volume available to gas molecules. The volume available to, see, gas molecules का ऐसा है कि they are independent, free, so they will go anywhere they want. Now you have to contain them by keeping a vessel. So इसका एक और better term है, volume available to gas, and you will write this, okay, to gas molecules or to roam around, okay. Volume, this is very important to write this, okay. Volume available to gas molecules. This is the exact definition. ऐसा volume of the container भी exact definition नहीं है, to informal definition है, ठीक है, for easy understanding. The correct definition, volume available to gas molecules. Okay. What is N? Number of moles. What is R? Universal gas constant. Gas constant. 0.0821 liter atmosphere per mole per Kelvin. ठीक है? ठीक है ना? और T is temperature in Kelvin. N is number of moles. T is temperature in Kelvin. ठीक है? By the way, from chemistry, you already know that number of molecules is equal to given weight by molecular weight. Here, given mass by molecular weight. So, given mass by molecular mass. ठीक है ना? इतना आता है ना सबको? ठीक. अच्छा. एक चीज और लिख लो, STP. STP क्या होता है? STP को गूगल करने दो. STP. Standard temperature pressure. कितना होता है? क्या होता है? Volume is 22.4. नहीं, वॉल्यूम नहीं होता. STP में वॉल्यूम कहाँ है? STP, where is V? No, it is not V. I'll come to your doubt. You are saying wrong. I'll come to the correct thing. Okay. What is STP? STP is one standard temperature and pressure. That's it. So temperature कितना है? 273 Kelvin. 273 Kelvin नहीं होगा, 298 Kelvin होगा. हाँ. STP conditions. It is 0 degree Celsius है. तो ये कितना है? 273 है ना? हाँ. 1 atm और 273.15 Kelvin और 0 डिग्री. इसको 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं. ठीक है. ठीक. अब सुनो. सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि पता चल जाए. वी आर मतलब सबको आता है इतना बेसिक. जल्दी से निकालो. अच्छा, एक चीज और लिखनी है. एक नया कांस्टेंट है. उस कांस्टेंट का नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके. एंड इट इज आल्सो कॉल्ड K. ठीक है. K. इसका वैल्यू है R/Na. R क्या था? गैस कांस्टेंट. और Na है नंबर ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट.
तो अगर तुम देखोगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज नॉट अ न्यू कांस्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ये डिवाइड किसके ऊपर भी न्यूमरेटर इज आल्सो कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो कांस्टेंट. इट इज नॉट अ न्यू कांस्टेंट, इट्स जस्ट, ठीक है, just some number. Okay, it was important before, it is not that important these days. Okay, ठीक है. Now the value of this, you, it is कितना होगा value बताता हूँ. I think you have to put R is okay. Just a minute. Okay, you have to find in SI units. SI units में R कितना होता है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट? और Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 और 23 into 10 power 23 into 10 power 23, ठीक है, और इसमें पर मोल, राइट? नहीं, पर मोल नहीं होगा ये, इसमें नहीं होगा पर, ठीक है, सोचना, हाँ होगा पर मोल होगा ना, वो पर मोल, राइट? पर मोल, नंबर ऑफ एटम्स पर मोल, राइट? सो दिस मेनी नंबर ऑफ एटम्स पर मोल. इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 1.38 into 10 power minus 23 जूल पर केल्विन. ओके, ये रिडबर्ग कांस्टेंट याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर इट. 1.38 into 10 power minus 23. You also have to remember that it came by R by Na. Okay, it came by R by Na. ठीक है, याद रहेगा ना. This is very important in numericals of this chapter, this relation. ठीक, ठीक. Now we will do some basic questions. Basic questions ये निकालो. You have to understand these 5 quantities, no? Pressure, volume, N, R and T. Okay. सबसे पहले प्रेशर पे नहीं, सबसे पहले हम जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स पे, एन पे. ठीक है, तो क्वेश्चंस करो, बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, तुमको निकालना है 32 ग्राम ऑफ O2 है, 32 ग्राम ऑफ O2 है, ठीक है. O2 गैस लिख दिया है मैंने, ठीक है. एन कितना है इसका, ठीक, लिखना है, बोलना नहीं किसी को, ठीक है. एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ठीक. ओके, सेकेंड है क्वेश्चन 2, n इज इक्वल टू 4 ऑफ He गैस, तो उसका वेट कितना है, मतलब मास कितना है, या वेट लिख लेता हूँ, कितना वेट है, तुमको ग्राम से बताना है वेट कितना है, ठीक. नहीं बोलना नहीं, आई डोंट नो, यू हैव टू नो हीलियम का मोलर वेट कितना है एंड यू हैव टू राइट इट, डोंट आस्क अराउंड, यू आर इन ग्रेड 12th. ओके, क्वेश्चन 3, फिर तुमको लिखना है व्हाट इज द मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दो कंपाउंड का, एक H2SO4 का, H2SO4 नहीं चाहिए ना इसमें, इस चैप्टर में मेरे को एसिड नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ये गैसेस का, H2 का चाहिए. H2 गैस एग्जिस्ट एज हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट H2. तुमको पता होनी चाहिए कौन सी गैस कैसे एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक की मोनोटोमिक. हीलियम कैसे एग्जिस्ट करेगी, मोनोटोमिक. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करेगी, N2. वेरी गुड. ऑक्सीजन O2. फ्लोरीन तो गैस नहीं होती ना, नियॉन Ne. ठीक है, सारे गैसेस कम से कम 30 तक जो भी गैस आ रहा है 30 एटॉमिक नंबर तक, वो सबका पता होना चाहिए कि कैसे एग्जिस्ट करती है, उसका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए. नियॉन के बाद क्या आएगा, नियॉन. आर्गन भी आएगा ना, आर्गन गैस. नियॉन के बाद क्या आता है, ओ सॉरी, नहीं, नियॉन इसके, नियॉन एटॉमिक एलिमेंट क्या आता है नियॉन के बाद, 10 पे हो ना. सोडियम. हाँ, सोडियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, सल्फर नहीं है. सल्फर के बाद क्लोरीन तो गैस है ना, क्लोरीन इज गैस और नो, इज नॉट अ गैस. गिव यू 2. क्लोरीन इज गैस, नो नहीं, पक्का लिक्विड. येलो ग्रीन गैस इज अ गैस, Cl2. उसके बाद क्लोरीन के बाद आर्गन, तो आर्गन का Ar, और पोटेशियम, कैल्शियम, स्टैंडियम, टाइनियम, अमोनियम, क्रोमियम, मैंगनीज,
आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। हाँ 30 तक बता दिए, बस बहुत है। अब इसमें बताओ सबका एटॉमिक नंबर वो लिखना है, वेट लिखना है, किसका किसका कितना एटॉमिक वेट है। क्वेश्चन 3 ये हो गया। क्वेश्चन 4 क्या लिखते हैं, एन पे और कुछ हो सकता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ एक चीज होती है मोल फ्रैक्शन, पता है ना मोल फ्रैक्शन, अरे कितने मोल किसका है बस। मोल फ्रैक्शन होती है एक्स, सपोज मैं मिला रहा हूं तुमको एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ 32 ग्राम O2 प्लस 28 ग्राम ऑफ 28 नहीं 20 14 नहीं 20 ग्राम नहीं 14 56 ग्राम ऑफ N2। ठीक ये मिला दिया, तुमको चाहिए मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन लिख दे रहा हूं मैं क्या होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A बाई टोटल मोल्स। ये है, ये थ्योरी है, तुमको यहाँ पे चाहिए क्वेश्चन मेरा ये है कि मोल फ्रैक्शन, इसको मोल फ्रैक्शन को एक्स भी बोलते हैं, एक्स ऑफ ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ऑफ O2 कितना है इस क्वेश्चन में। ठीक है चलो 32 ग्राम ऑफ O2। श्रेया टेल मी द फर्स्ट आंसर। श्रेया अनम्यूट। Yes, sir. फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। I have to do it. Sam tell me the question number 2 answer। Question number 2, it's of 16. What is the weight of one mole of helium? 4. 4 gram, right? Yeah. Correct. Hydrogen, helium. Yeah, 4 grams. So it is 16 gram. First one is 1. नहीं फर्स्ट वन नहीं बोलना, जो बोला वही बोलना बस। सैम इसमें पहले 3 वाले के आंसर तुम बता दो। H2 is 1. No, Sorry, 2, it's 2. sorry, 2. And then helium is 4. N2 is 28. हाँ ठीक बस बस। वरुण आंसर ऑफ O2 NaCl2। O2 is 32 gram। नियॉन का नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है। Don't ask me। तो वेट कितना होगा 20। I think it's 20, you check it out, okay। क्लोरीन 71 okay, important 71 Cl2 okay। आर्गन का, आर्गन शुड बी 40 नहीं 18 है ना। 18 Mass is 40. mass is 40, although its atomic number is 18, I think mass is 40, okay। Shreya, you got the first one। So is it like 2 into the Avogadro number? Pardon, what is asked in the, you tell me the question and what is asked in the question। They're asking like the number of atoms in 32 grams of O2. number of moles पूछ रहा हूँ। Of moles. n small n है ना। Yeah. कितना है। That's given mass by molecular mass, right? yeah given mass कितना है। 32 grams. molecular mass कितना है। 16. नहीं molecule 16 ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस का नहीं है। O2 is one full molecule, no। Oh yeah, then that's also 32. कितना 32. 32, so number of moles of 1। ये किसका किसका नंबर ऑफ मोल्स है, ऑक्सीजन एटम्स का कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। रॉन्ग, इट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2
molecules. Write it. 1 mole of oxygen, O2 molecules. How many oxygen atoms are there? There are 2 mole of oxygen atoms. And which is also saying 2 into Avogadro number of oxygen atoms. Okay? Got it, Shreya? Yes, sir. Okay. Now, Shreya, in this, how many moles of oxygen molecules are there? 1. 1. इसमें कितने molecules of moles of nitrogen है? So what is the molecular mass of nitrogen? Oh, is it 2 moles? It's 2 moles. So mole fraction of oxygen will be, what is the number of moles of oxygen divided by the total moles? So कितना आंसर होगा इसका? Sir, I didn't understand what were we supposed to find here. Mole fraction of A is mole fraction of A by total moles. Okay. Okay, so that is mix of the 32 grams of oxygen Yeah. molecule and that. 56 grams of nitrogen. So in this mixture, there is 1 mole of oxygen gas and 2 moles of nitrogen gas. So how many total moles are there? 3. 3. I'm asking you mole fraction of O2. So X of O2 is the number of moles of oxygen, which is 1, divided by the total moles is 3. Okay. Okay. X of N2 will be how much? 2 by 3. 2 by 3. Okay. Written everyone? ठीक. So this is about N. N we have discussed. N के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेशर पे थोड़ा सा. ठीक है. देखो प्रेशर में you should know the units. What is 1 atm is equal to 10 to the power 5 Pascal. 1 Pascal, 10 to the power 5, right? 1 bar is 10 bar. 1 second. And 1 Pascal is how much? 1 Newton per meter square, right? Yes. 1 Newton per meter square. Okay, so this is the SI unit. Okay. Or एक और unit of the 1 atom is also equal to some 760 mm of Hg, no? Yeah, 760 mm of Yeah, fish. it is also 760 mm of Hg. ये सारे पता होना चाहिए, ठीक है? There is also 1 bar. What is 1 bar? 1 bar is 10 bar 5 Pascal. 1 No. atm is 1.05. No, 1 atm is यहाँ पे 1.0. yes correct बोल रहा है. 1 atm is equal to हाँ सही है. देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा सही करो. ये 1.01 करो इसको into 10 power 5 Pascal. ठीक है. तो पास्कल और बार बराबर है क्या? No, a bar, it doesn't have the 10 to the power 5. It's only 1 point something. अच्छा 1 atm to 1 atm is equal to bar. It is 10 to the power. It is 10 bar. Yeah. आ रहा है इसमें एक मिनट. अच्छा 1 atm is equal to just 1.01 bar. ओके ठीक है. ठीक है. ठीक है. 1 बार bar is 10 to the power 5. बार एंड पास्कल. बार टू पास्कल. ओ ठीक है ये लिख लो. 1 बार is just pure 10 to the power 5 Pascal. Okay. ठीक. Now this should clear all your conversion questions. Okay. ठीक है ना? ठीक. ये हो गया. तो ये हो गया प्रेशर पे डिस्कशन हो गया. वॉल्यूम डिस्कशन हम पहले ही कर चुके थे. वॉल्यूम में क्लास स्टार्ट होने से पहले डिस्कस किया था. वॉल्यूम का ये है, लिख लो सब लोग जिसको नहीं आता है. 1 meter cube is 1000 liter, 1 liter is 1000 ml, and 1 and everything we quickly note in this. What is it? 760 mm of mercury. Yes. हाँ. Yeah.
ठीक, तो P हो गया, V हो गया, R हो गया, N हो गया, ठीक है ना। R नहीं, R भी बता दिया, टेम्परेचर बताया, टेम्परेचर तुमको पता है 760 mm of Hg, 760 mm 76 centimeter, right? I mean 1 atmosphere pressure raises the height of that much mercury. That pressure which raises the mercury height to 76 centimeter from the ground is 1 atmospheric pressure. Okay, ये understood no? एक और लिख लो, R को क्या बोला था, R का एक बोला था 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और एक बोला था हमने 0.082 0.0 है ना, 0.00 नहीं, 0.021 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड 1/12। इसका नंबर जो है ये 1/12 के बराबर है, ठीक है। सो इन सम न्यूमेरिकल्स यू कैन पुट दिस 1/12, ठीक है। और लास्ट क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो पता है तुमको, क्या डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री केल्विन प्लस 273, नहीं उल्टा, 1 Kelvin is 274. डिग्री सेल्सियस, Yeah, that's 1 is equal to T plus 2. हाँ ये केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है ना। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पे 273.15, और केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगती तो उसको एडिट कर देना, देयर इज नो डिग्री ऑन केल्विन, ओके। केल्विन इज अनएजुकेटेड, ओके। नाउ equal to nRT. Next up we have behavior of gases, okay, behavior of gases. लिखो, this is important condition in this chapter. Gases at low pressure and high temperatures, at low pressure and high temperature behave like ideal gas, and ideal gases obey PV equal to nRT, ठीक है, okay. Gases at low pressure and high temperature behave like ideal gases, and ideal gases obey PV equal to nRT, ठीक। लिखो, a real gas may or may not obey PV equal to nRT. Real gas may or may not obey PV equal to nRT, ठीक। अब क्वेश्चन लिखो, when will real gas obey like ideal gas? When will real gas behave like ideal gas? Low pressure and high temperature, okay. When will real gas behave like ideal gas? Low pressure and high temperature, okay. Temperature and this is PV by temperature. Sure. Volume should decrease, okay. Now see, there is one very important curve. You have done these type of curves before. P versus V. इसका कर्व फॉर रियल गैस के आइडियल गैस कैसा होता है, कैसा होता है पीवी? वी तो कैसा होता है, कैसा होता है, ऐसा ना, हाँ ये ना, ये पता है, राइट। लिखते रहो, फॉर दीज ऑल दीज लिखो, ऑल दीज ग्राफ्स आर फॉर आइडियल गैसेस, व्हाट वी आर मेकिंग इज फॉर आइडियल गैसेस। जल्दी लिखो, जल्दी। उसके बाद अगर मैं V वर्सेस T बनाऊं तो कैसा होता है,
V वर्सेस T नहीं, T वर्सेस, देखो V वर्सेस T बनाओ या T वर्सेस V बनाओ, V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, ठीक। और टेम्परेचर किस में बात कर रहे हैं? केल्विन में बात कर रहे हैं। तो 0,0 से पास होना चाहिए, कहां से? 0,0 से पास होना चाहिए। तो ग्राफ रियल, एक मिनट, सॉलिड लाइंस एक्सपेरिमेंटल एंड चार्ल्स लॉ, हाँ, so you should have it like this, right? I mean they should pass through like this, right? समझ में आया? आ गया ना, ठीक। अगर ये dotted the purpose. नहीं, we'll come to it, okay, we'll come to it. Dotted is space in between. I made it dotted by purpose. It is not a writing error, okay? If the temperature was in Celsius, you have to understand temperature was in Celsius. तो टेम्परेचर सेल्सियस में कभी जीरो नहीं होता ना, नहीं, जीरो हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। Kelvin can't be zero. हाँ, केल्विन कांट बी जीरो सेल्स। तो इसका जो ग्राफ है वो, तो वॉल्यूम जीरो कहां पर होगा? टेम्परेचर नेगेटिव में होगा। समझ में आया? आया ना? जीरो टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जीरो नहीं होता ना। ये डिफरेंस समझ में आ गया ना बस टेम्परेचर में और, ठीक है, ओके। नाउ व्हाई डिड आई मेक दिस रीजन डॉटेड इज बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली, तुम नहीं कर सकते वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर जीरो, यू कैंट रीच देयर, राइट? if you can reach there, yes, this graph will become solid, right? ठीक है, with advance in technology this graph is becoming solid day by day, okay? ठीक, और कौन सा? एक टीवी, एक हो गया पीवी, ये दो जानने चाहिए, ठीक है, ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज फॉर रियल गैसेस, ठीक। एक चीज और, एक ग्राफ This is not ideas. आइडियल गैस पे आ रहे हैं, सॉरी दीज आर फॉर आइडियल गैस, माय बैड, एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग इज फॉर ideal, okay, ideal gas. There is one more graph, think about it, you tell me, उस ग्राफ में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं z क्या होता है? PV by, for 1 mole it is 1 RT, for n moles it is nRT, ठीक है। for if you take n is equal to 1 mole, then z is equal to PV by RT, right? समझ में आ रहा है ना? ये एक चीज है, मतलब जैसे PV इक्वल टू nRT है, तुम nRT को नीचे ले आओ तो PV by nRT एक क्वांटिटी एक डिफाइन की है, ठीक है। Z have a name, yeah, it does have a name, yes, it does have a name, 1 second. Compressibility of ideal gas. Is that atomic mass? No, Z is not atomic mass. It is called compressibility factor. Z is called compressibility factor. ठीक है, Z is called compressibility factor. And this graph is the most important graph in this chapter because ये पहले वाले दो ग्राफ तो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो ना, नया ग्राफ ये compressibility factor। अब मुझे बताओ फॉर आइडियल गैस PV by nRT कितना होगा? 1 होगा ना, right? So in this chapter we will plot Z versus P. So if Z value is 1, it doesn't matter what is the pressure value, it is always 1, right? So it is a line like this. For ideal gas it will be like this, understood? Z itself is PV by nRT. ओ तुम बना सकते हो उसको, you don't have to understand it here. हाँ, for PT graph you can make it, PT graph is like this, no? हाँ, but it is not discussed in this chapter, ठीक है? We will discuss it. मैं तुम्हारे बुक में नहीं है बस इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है? Understood? ठीक, अब सुनो। So this graph is there for real and ideal. Compressibility. That we're going to discuss. We were going to discuss all the graphs for now. Real gas. अभी आइडियल डिस्कस कर लिया ना, अब रियल गैस डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है कि दो डिफरेंस होता है, ठीक है? सबसे पहले क्या असम्पशन था? पहले असम्पशन था, यहाँ पे देखो, याद करो, एक असम्पशन था कि ये था असम्पशन, कहाँ गया, ये असम्पशन था। क्या असम्पशन था यहाँ पे? सॉरी,
यहाँ पे assumption क्या बताया था, बोलो याद करो। What was the assumption, guys? यहाँ पे इस part में, So gas molecules don't know the existence of the molecules near them. because they don't interact with each They other, don't interact. right? Do you think this is like true always? No. The gas molecules don't interact with each other So I guess. for ideal gas. Okay, they're far off, so they don't interact, right? ठीक. So there are basic two, like basic two assumptions on which the ideal gas is different from a real gas. So two basic, बहुत सारे assumption है, but two basic जो हम पढ़ते हैं वो ये है. तो two basic assumptions for ideal gas. पहला है gas molecules don't interact. जब मैं interact बोलता हूं तो उसमें attraction और repulsion दोनों आ जाता है, ठीक है? They neither attract, they don't repel. Okay, so attract, और तुम्हारे सिलेबस में भी तुम attract लिख लो, attract each other. ठीक, they don't attract each other. Fine. The second assumption we will understand it later. The second assumption is that gas molecules themselves don't have any significant volume. Okay, they don't have any significant volumes. ठीक, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा बाद में आएगा, पहले इस पे डिस्कस करते हैं. गैस मॉलिक्यूल्स डोंट इंटरेक्ट और अट्रैक्ट विद ईच अदर. थिंक, अच्छा इसमें प्रेशर, हाँ अब सोचो एक डब्बा है, ठीक है? एक डब्बे में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे 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 ऐसे, दे आर कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, ये ऐसे हिट करते हैं ना, ऐसे इधर उधर जाते रहते हैं, राइट? ठीक. What did I define pressure as? Give me 30 seconds, okay? What did I define pressure as? What is pressure? On the walls of the container. So what is happening? If you were a human, of course you're a human, you keep your hand here, okay, on the wall of the container, okay? तो अपना हाथ यहाँ पे रखो. अच्छा इमेजिन करो गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, देयर आर बॉल्स, ठीक है? बिलियर्ड बॉल टेबल, बिलियर्ड टेबल पे तुमने हाथ रख दिया ऐसे. आफ्टर सम टाइम एंड पीपल आर प्लेइंग, you will hit a billiard ball, will hit you, it will hit you, it will hit you, so it is coming with some velocity, right? It will revert back, so it was coming with some momentum, it is going with some momentum, so there is momentum change. That momentum change, who has given it? The wall, which is your hand, the collision, right? Momentum change in some time, therefore delta p by delta t, मतलब क्या मिला है? Delta, what is delta p by delta t? Force. Delta p by delta t. We'll do this in detail. Right now, understand qualitatively that if this momentum changes of the ball, therefore the wall must have applied a force, right? Otherwise, कैसे होगा ball का momentum? किसने force दिया? Wall applies force, right? Applies force. Now, because it has some unit area, right? Has some area, right? So we can also say wall applies pressure. Understood? Take at the wall, yeah. Yeah, the ball bounces back. एक मिनट, मैंने वो बॉल जिसने फेंकी है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसने भी फेंकी हो उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ. बॉल के पास कुछ वेलोसिटी थी, 5 मीटर पर सेकंड ऐसे जा रही थी, वापस आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ऐसे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, कोलिजन होगा 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे आएगी. क्या बॉल को मोमेंटम चेंज हुआ है ना?
Momentum is a vector quantity, it's not a scalar quantity. Don't say the initial momentum is equal to final momentum. Only the magnitude is same. Direction तो उल्टा है. Momentum change हुआ है. ये momentum change किसने किया है? किसने momentum change होता है मतलब force हुआ है, force लगा है. Ball पे force किसने लगाया है? Wall ने लगाया है. कितना, और अगर wall का area है तो क्या लगाया है? उसको और क्या बोल सकते हैं? Pressure लगाया है. कौन लगा रहा है pressure? Wall लगा रहा है. ठीक. अब सुनो, अगर wall जो है pressure अपना कम कर दे, pressure को कम कर दे, क्या होगा? Will be less change in the direction. Less change. ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो. देखो, मान लो तुम ना मेरे ऊपर एक वाटर फाउंटेन मार रहे हो. क्या मार रहे हो? वाटर फाउंटेन, जेट. मैं अपने हाथ लगाया हूँ तो क्या हो रहा है? जेट इज हिटिंग माय हैंड, इज बाउंसिंग बैक, एंड इफ आई लूज दिस, ये पीछे जाएगा ना. इफ आई मेक दिस लूज, इफ आई मेक दिस अप्लाई मोर प्रेशर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, मेरा हाथ आगे जाएगा, राइट. अगर यहीं पे रखना है हाथ को तो क्या करना है? आई हैव टू अप्लाई equal and opposite force oblique pressure. I have to apply equal and opposite force oblique pressure as the gas molecule, right? इसका मतलब अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड है, इस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड है मतलब नहीं एक्सपैंड नहीं हो रहा और कंट्रैक्ट नहीं हो रहा. if the volume, if volume is fixed, if volume of container is fixed, the pressure applied by walls on gas molecules must be equal to P applied by gas molecules on wall, right? ठीक है ना? If the pressure, if the gas molecules win, what will happen? Wall break. Huh? Wall break. Wall Wall expansion, expansion होगा ना, right? If the gas molecules win, what will happen? Expansion होगा. इसको बोलते हैं volume expansion. If wall win, walls win, contraction will happen. Understood? Understood? जैसे एक बलून है, बलून में अगर मैंने फुला दिया और उसको ऐसे एक पर्टिकुलर एक बलून है, ठीक है, एक बलून को फुला दिया, ठीक, अभी वो उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है ना, राइट. तो जितना ये वाले मॉलिक्यूल्स उसको हिट कर रहे हैं उतना ही वो बॉल भी उतना ही प्रेशर अंदर लगा रहा है. अंडरस्टूड? ठीक है. द मोमेंट if you hit this, suppose if you hit this balloon, right, without breaking it, these gas molecules gain extra energy and they hit the molecule gas wall, sorry, balloon walls with higher energy, so the balloon expands. ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ओके, अंडरस्टूड? ठीक. नाउ आइडल गैस में क्या है? आइडल गैस में गैस मॉलिक्यूल 1 does not attract gas molecule 2, right, or 3 for that matter. But in real gas, what happens? 1 and 3 attract each other, right? If they attract each other, some of their forces are lost within themselves. Okay, and now you tell me whether, with the assumption, listen carefully, okay, ideal gas mein they don't have any force attraction between them. Real cases में they have force of attraction between them. Ideal gas में जो pressure लगा रहे हैं walls पे वो ज्यादा होगा कि real gas में जो pressure लगा रहे हैं walls पे वो ज्यादा होगा? Ideal gas में ज्यादा होगा ना, यानी real gas में कम होगा. कम होगा ना, इसको लिख लो, write it. In real gas, Sir, okay. you tell me. I don't get like, so well they attack each other. If they attract, if the molecules attract each other, will they be hitting the wall with the same energy as before? No. Write this. If the gas molecules attract each other, they will not be hitting the the walls with the same force as before, a lesser force than before, right? Huh? Right? Right?
pressure exerted by gas molecules on wall, right, is greater in which case? Ideal case में it is more than real case. Okay, understood? ठीक, अब सुनो, गैसेस का प्रेशर, गैसेस के प्रेशर कैसे डिफाइन किया था, ऊपर फिर से बोलो डेफिनेशन, बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन हम कैसे प्रेशर मेजर करते हैं किसी भी गैस का, हम कैसे करते हैं प्रेशर, हम ऐसे करते हैं, all our pressure measures are reactive pressure measurement, मतलब we measure the pressure of the wall, कि वॉल में कितना प्रेशर है, ठीक है। हम ऐसे हाथ लगाते हैं और देखते हैं कि कितना प्रेशर हिट कर रहा है, ठीक। अब सोचो, आई पुट, मैंने अपना हाथ लगाया, ठीक है, और आई फाउंड आउट दैट इट वाज सपोज 10 पास्कल, ठीक है, 10 पास्कल है in a real gas it was 10 pascal. Okay, this is my experimentation, I हाथ लगाया, there are devices, some barometer, sphygmomanometer, some they which define pressure. Basically क्या करते हैं, वो हाथ लगाते हैं और देखते हैं कितना कितना collision यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सबका basic concept वही है. So I took a real gas and found out that the pressure was 10 pascal. Then क्या गया? हाँ हाँ आ गए थे, तुम उसमें लिंक अपना भेज दो ग्रुप पे, ऑलरेडी दिया है। नहीं फिर से भेज दो, वो मेरे में आ गए थे. ओके, if the gas would have been ideal the pressure would be 12-13, understood? ये लिख लो. Experimentally we found out that the pressure was 10. Okay, if the gas would have been ideal the pressure would have been a slightly more, and this is the pressure. एक मिनट पहले ये लिखो. If the gas would have been ideal the pressure would have been more, लिख लो, let's say 12 pascal, ठीक है. ये जो 2 पास्कल का डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? लॉस ऑफ एनर्जी और अट्रैक्शन, ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड श्रेया एंड सैम एंड सुजॉय? ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया ना? तो देयरफॉर फॉर आइडियल गैस यू राइट PV equal to nRT, right, but for real gas the pressure you should write should be ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर, वो प्रेशर जो P होता है ना, जो P होता है वो होता है जो हमने क्या नापा. P एक्चुअल प्रेशर नहीं होता, P क्या होता है, हमने क्या नापा. हमने जो नापा है उससे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए. देखो आइडियल गैस में ये इक्वेशन होती है कि P equal to nRT, ठीक. तुमने जाके एक एक्चुअल नहीं, वो लेस है ना. रियल गैस में जो वी मेजर्ड वी फाउंड आउट वाज लेसर, राइट. तो अगर मुझे आइडियल गैस में डालना है तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए ना. इस आइडियल गैस इक्वेशन में सिर्फ आइडियल प्रेशर ही आएगा, राइट. जो आइडियल गैस का, अगर आइडियल गैस होती तो क्या प्रेशर होता, ठीक है. और मैंने रियल गैस का जाके नापा प्रेशर, तो मैं वो प्रेशर तो यहाँ नहीं डालूंगा ना, थोड़ा बढ़ा के डालूंगा. अंडरस्टूड? देख, ये जो सुनो, पहले लिखो, ये दिस इक्वेशन इज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है. दिस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर आइडियल गैस, इट कांट बी यूज्ड फॉर रियल गैस. I go to a real gas, I measure its pressure. If the pressure I found out was 10 pascal, if it was ideal, the pressure should have been. So what pressure should I put in this equation? अरे 12 no, 2 कहाँ से आ गया? हाँ 10 plus 2, तो 12 होना चाहिए, right? Understood? No? ठीक है. Whatever pressure measurements you do are real pressure measurements. They are not ideal pressure measurements. Understood? अगर कहीं भी दिया 600 नैनोमीटर पास 600 mm of Hg, it is real pressure measurement. Okay, ठीक. So therefore for real gas it is P plus something. अब वो होता है ये AN square by V square. Why it is this value we don't know, no need. But why is this
by real gas plus some H. Yes, and this plus y, ये plus का y बता दिया ना तुमको, why it is plus, Yeah. and this pressure is for real gas pressure. समझ में आया? Understood? And if you want to understand, you can write more and more. 10 plus 2, this 10 is real gas, and this 10 plus 2 whole as a whole is ideal gas. Understood? समझ में आ गया ना So सबको? P plus J square by V square is the pressure or the Pressure term, just the pressure term. We are not discussing about the volume term. Okay? Understood? ठीक, ये पूरा concept clear हो गया? बाद में A नहीं, A कुछ तो है, N number of moles है, V volume है, ठीक है? वो सब वो जानना भी नहीं है, बस ये जानना है कि प्लस क्यों है, बस। ठीक, दूसरा यहाँ पे दूसरा है, ये समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा और लिखना है तो लिख लो अपने वर्ड्स में, मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, ठीक है? जल्दी लिखो, जल्दी। what is A? What is A? A, N, and V. N is number of moles, V is volume. No one is going to ask a numerical which involves this. Okay. ठीक है, ये हो गया। Now you write, this was the second assumption, right? Gas molecules themselves don't have any significant volume. Okay, now we will do some numerical for it. Okay, सबसे पहले numerical क्या करेंगे, 1 मिनट। हाँ, ओके, चलो ये लिखो, हमने पीवी को एनआरटी पढ़ लिया, तो एक क्वेश्चन लिखो, एट एसटीपी क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ O2 गैस है, 1 मोल ऑफ O2 गैस है, ठीक है? एसटीपी मतलब कितना टेम्परेचर है? 273 केल्विन, ठीक है? सिर्फ केल्विन में ही बात करेंगे। प्रेशर कितना है? 1 atm है, और उसको अगर उसको उसमें लिखना है ASI, ये पास्कल है, राइट? पास्कल है ना, ये पास्कल है ना, ठीक। अच्छा, और R की वैल्यू कितनी होती है SI यूनिट में? 8.314, ठीक है? अभी इसमें लिखना ऑक्युपाइज हाउ मच, क्वेश्चन है ऑक्युपाइज व्हाट वॉल्यूम, लीटर्स। ओके, तो कैसे करेंगे? प्रेशर कितना है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, वॉल्यूम नहीं पता, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1, R क्या है? R is 8.31, you can take it 10 power 5, ठीक, एंड टेम्परेचर इज 273। निकालो कितना आ रहा है वॉल्यूम। You can use a calculator. Tell me quickly. इस वॉल्यूम का यूनिट कितना आएगा? ये वॉल्यूम का यूनिट कितना आएगा? मीटर क्यूब आएगा ना इस वॉल्यूम का यूनिट, ठीक है? क्योंकि सारा कुछ ऐसा यूनिट में डाला है मैंने, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नहीं, नो, नेवर एवर यू विल हैव अ क्वेश्चन वेयर an square by v square में का फॉर्मूला चाहिए। Yes, you will never have a numerical on real gas. Okay. minus 2.24 आ रहा होगा 2.247 in 10 power minus 5, no?
कितना -2 राइट, ठीक, ये आंसर आ रहा है, यही आंसर है, ठीक है। एंड 1 मीटर क्यूब वाज हाउ मच लीटर, हाउ मेनी लीटर्स, बस इसको तो वॉल्यूम इज ऑल्सो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से तो आएगा 22.4 लीटर, ओके ठीक। अच्छा अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, सब लोग देखो एक बार फिर से। You explain to me the question, Watson. What is the question and what we have done? We found out how much Watson, volume does 1 mole contain. Watson, I asked Watson. At STP, 1 mole of water gas, like it occupies how much? जोर से, liters? जोर से. Yeah. So at STP, 1 mole of water gas occupies how much liters? So like STP at Kelvin degree is 273, and at 1 atm it is 1.01 × 10⁵ pascals, and R is 8.312. So find the volume at 1 atm into the volume equals to 1 of 8.314 into 273 Kelvin. So with that volume. 2.4 liter, okay. Did we use any property of oxygen gas here? No. Did we write 32? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, 1 mole है तो लिखो 1 mole of any gas occupies 22.4 liter at STP, ठीक है। Any gas, any मतलब any ANY, okay, 22.4 liter at STP, ठीक। Okay. Now there is a question in your book also. We are going to do it. ये O2 गैस 1 मोल है ना, एक मिनट क्या लिखा है उसमें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाँ। एक क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा होता है ना, O ऐसे होगा ना, डबल बॉन्ड है ना, बोल रहा है इस पूरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ये इसको स्फीयर मान लो, ठीक है, लिखो टेक इट एज अ स्फीयर, लिखो जल्दी, ठीक। और उसका जो डायमीटर है वो कितना है, द डाया इज इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम, which is एंगस्ट्रॉम कितना, 10 पावर माइनस 10 मीटर ना, so 3 into 10 पावर माइनस 10 मीटर, मीटर से डायमीटर है, तो रेडियस इसका हाफ होगा, 3 into 10 पावर माइनस 10 तो 1.5 राइट। ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू मैं बता रहा हूँ, 1.5 into 10 पावर माइनस 10 मीटर, ठीक। तो अच्छा कितना वॉल्यूम होगा इसका, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब ना, so 4/3 pi and then 1.5 into 10 power minus 10 का क्यूब, राइट, ये मीटर क्यूब है, ठीक। अच्छा क्या एक मॉलिक्यूल है, नहीं, कितने मॉलिक्यूल है, इसी में, इसी केस में कितने मॉलिक्यूल, 2. अरे नहीं, कितने मॉलिक्यूल हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा कितने एटम है मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है, इसमें कितने मॉलिक्यूल है भाई, Answer 1. एवोगाड्रो नंबर ना, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना 1 मोल में, सो टोटल volume of these molecules is equal to volume of one molecule into Na, क्योंकि यहाँ पे एक मोल है इसलिए, 2 मोल होता है तो 2Na, 3 मोल होता है 3Na, ठीक है। इसको जब करोगे तो 4/3 पाई इंटू 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। और ये किसमें, इसका यूनिट क्या है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब, ठीक। इसको जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, पावर तो अलग अलग रख देना, ये -30 आएगा, यहाँ से -23 आएगा, 10 की पावर -7 आएगा, और बाकी नंबर बताओ, जल्दी करो जल्दी।
85.13 10 to the power minus 37 point something. एक मिनट what come again Sam 37.81816. पर तो ज्यादा डेसिमल नहीं चाहिए 0.81 into बस ये 10 power minus 7 no it should not be एक मिनट आ रहा हूँ 37.81 into 10 power minus 7 ये आ रहा है ठीक से करो क्या आ रहा है ये दो आंसर सेम चाहिए 85.1 both were क्या 85.1 into 10 to the power minus 7 अच्छा एक का 37 है 85 आ रहा है चेक करो बाकी लोग भी क्या आ रहा है सही Wait, so 1 minute, I'll see again. 4 3 3 4 और 4 6 24 into 1.5 का क्यूब होगा 2.25 into 1.5 will be 55 2.25 into 1.5 will be 4 into 24 24 into 4 हाँ 80 के ऊपर आएगा 85 आएगा 85 into 10 power minus 7 क्या मीटर क्यूब अच्छा 1 मीटर क्यूब कितना होता है 1000 लीटर ना तो इसको अगर मैं उसमें कन्वर्ट कर दूं लीटर में तो इंटू 10 power 3 हो जाएगा ना मतलब you have to multiply by 10 power 3 right so we get 85 into 10 power minus 4 liter right है ना 85 ये approximately आंसर है अच्छा 1 liter is how many milliliter 1000 so I can also write 885 into 10 power minus 1 milliliter right which is 8.5 ml समझ में आया कि नहीं 8.5 ml अब डाउट ये था कोई पूछ रहा है सर इसका आंसर ये 22.4 लीटर क्यों नहीं आ रहा राइट ये आना चाहिए था तो दोनों क्या मतलब होता है इसका क्यों नहीं आ रहा इसलिए नहीं आ रहा एक कंटेनर लिया तुमने 1 लीटर का एक्चुअली देखो क्या मतलब है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देमसेल्स है ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वो तो बहुत छोटे सी गोले गोले की वॉल्यूम बहुत छोटा है ये एक्चुअली जो गोले गोले है ना ब्लैक डॉट्स they are just 8.5 ml okay Rishima your class is from 7 p.m. ठीक but What's on? their your class is from 7 p.m. Oh, okay, sir. Okay, fine. but what they are colliding everywhere they're moving everywhere okay and this container volume the volume they're occupying is 22.4 liter okay okay so they were a solid metal 8.7 if they were liquid yeah if you liquefy this much amount of gas oxygen gas you will just in a test tube you will get how much liquid 8.5 ml understood ठीक है ये बंद कर दो दरवाजा it is 22.4 liters because of the empty space yes okay so you can ask me a better question sir if I double this empty space it should be 44.8 liter but this the pressure will be reduced right वो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वही इंपॉर्टेंट है 8.5 ml is the volume of the gas molecules 22.4 liter is the volume occupied by those gas molecules समझ में आया नहीं आया लिखो 8.5 ml is the लिखेंगे इसको थोड़ा सा ठीक है 8.5 ml is the volume of the gas molecules themselves okay while 22.4 liters is the volume occupied by the oxygen by the gas molecule ठीक है understood while we were discussing volume ये लिख लिया तुमने while we were discussing volume हमने वॉल्यूम को डिफाइन क्या किया था वॉल्यूम को डिफाइन किया था ऊपर जाएंगे
volume available to gas molecules to roam around, right? Volume to gas molecules to roam around. ठीक, अभी मान लो आई नो कि एक गैस कंटेनर है, उसका प्रेशर 1 atm है, ठीक है, जोर से बोलो। हाँ, यस यस, ओके, ठीक है ना? Because if see, very good question. If you want to calculate the volume of the gas molecules, you have to go inside the molecules using a microscope or electron microscope. You have to see the microscope how large it is. You have to. Oh, that's no n. That's number of moles, no. If I give you the see 1 mole of any gas occupies 22.4 liter. तो अगर मैं एक कंटेनर लूं 22.4 लीटर का, ठीक है, उसमें 1 मोल गैस डाल दूं, टेम्परेचर उतना रखो तो प्रेशर कितना आएगा 1 atm। समझ में आया ना? नहीं आया समझ में? Sir, this 1 meter cube is equal to 1,000 liters. हाँ, Does that apply only to water? 1 meter cube is a wall. It is not a matter का चीज नहीं है वो। Yeah. It's a concept of space. It's the density which is. Density भी नहीं है, अरे density नहीं है। So I Read, ask your question again. in space of 1 meter cube, In space of 1 meter cube, you can add also the what अच्छा what is the लीटर किसका यूनिट है? नहीं, वॉल्यूम का लिक्विड है, वॉल्यूम का यूनिट है स्पेस। इट्स द मेजर ऑफ स्पेस। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? एरिया, राइट? एरिया ऑक्युपाइड इन 2 dimensional। literally you can say it's a वॉल्यूम ऑक्युपाइड, हाँ, मतलब वो it's not कि it's you are going into density, volume, only volume। So water kept in 1 meter cube of crude and oil kept in 1 meter. They both have the same volume. Iron kept in 1 meter cube has the same volume. It should be. I don't ask your question again. अच्छा ये बोल रहा है, देखो listen. Suppose I have a 1 meter cube by 1 meter cube by 1 meter cube of iron block. ठीक है? I have 1 meter cube by 1 meter cube by 1 meter cube of iron block. 1 minute 1 meter cube of iron block है और 1 meter cube of air block है, ठीक है? Of course mass of air बहुत कम होगा, ठीक है, लेकिन what about number of molecules? देखो वो कैसे डिसाइड होता है। आयरन में इंटरएटॉमिक स्पेसिंग देखनी पड़ेगी कितनी, तुमको एक्चुअली चाहिए ना, एक्चुअली कि एटम्स का कितना वॉल्यूम, तो कैसे निकालेंगे? तुम जाके देखोगे आयरन एटम को, आयरन एटम का डायमीटर कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लिया, ठीक, कैलकुलेट नहीं करने को, देखोगे एक्सपेरिमेंटली फाइंड करोगे, ठीक, फिर क्या करोगे, तुम जाओगे डेंसिटी पे कि ये जो वॉल्यूम, इसका मास नापोगे। अगर तुमको चाहिए एक्चुअली वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द आयरन एटम्स कितना है, तो पहले तुमको जाना पड़ेगा, वॉल्यूम तो तुम्हारे को पता है 1 मीटर क्यूब, उसका वेट नापो कितना आएगा, कुछ तो आएगा, ठीक, वहां से क्या मिल गया, वहां से तुमको मिल जाएगा वेट मिल गया, तुमको पता है आयरन के एक एटम का वेट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स से तुमको मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स व्हाटएवर, ओके, नंबर ऑफ एटम्स मिल गया। अब नंबर ऑफ एटम्स इनटू द वॉल्यूम ऑफ ईच एटम व्हिच यू हैव फाउंड एक्सपेरिमेंटली will give you the volume occupied by actual volume occupied by the iron atoms. Understood? ठीक है? All these calculations will only give you the volume occupied by the iron as a whole, not the extra space कि उसमें स्पंज के बीच में कितना जगह है, वो नहीं बताएगा, ठीक है? अगर स्पंज के बीच में कितना जगह वो चाहिए तो एक्चुअली तुमको एक्सपेरिमेंट करके निकालना पड़ेगा कि एक आयरन एटम का वो कितना होता है, मास नहीं साइज, उसका रेडियस कितना होता है वो निकालना पड़ेगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? वही चीज गैस में कर रहे थे, अभी गैस में वही किया है, ठीक है ना? ओके। So, sir, what I asked was,
let's say container A, 1 meter is 1 meter. In A, I have water to the bottom. Yes. In B, I'm adding oil to the bottom. Okay. Why don't you taking oil? Take oil. Take your oil. Take your oil. So, do I have to use 1,000 liters of water to this A? Is the volume 1000 liter? Yes. Then And you for use oil also 1000 liter. Yes. Where is density coming? Density is Density comes in the picture where key. देखो. but there must be a percent, and that's a Hmm. Hmm. yeah. Yes, that is their volume occupied by them, not their actual volume. It doesn't matter what their actual volume is. देखो ऐसे सुनो. You mean by actual volume without the extra space? That's what you mean. Actual volume without the extra space should not even enter this discussion. You are asking me one volume of one liter of iron, 1 liter of gold, coal, 1 liter of oil, 1 liter of water. The volume occupied by this is 1 liter. सबका same है. What is the दिखने में क्यों नहीं लग दिखने चाहिए? Volume occupied है ना? Volume occupied वो same है. Volume मतलब amount might be different. तुम अमाउंट कैसे मेजर कर रहे हो तो बताओ. अमाउंट इज अ वेग टर्म. अमाउंट कोई फिजिकल टर्म तो नहीं है ना, फिजिक्स टर्म तो नहीं है ना. तो अमाउंट बोलो क्या है? स्पेसिफाई समथिंग. मास could be different. It could be different because their densities could be different. Even the number of molecules of each of them will be different. Of course, they will be different. Okay. For example, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसे समझ में आएगा. Suppose four students enter this classroom. The volume available in this classroom is this much. Okay. 4 students enter this. They both are very good friends. They can sit here, right? You will say the volume occupied by these 4 students is one room, right? It now, and suppose some other 2 students come in some other classroom. Those students are very fightful with each other. They don't fight with each other. So only those 2 will sit, right? Understood? Thick. So now only 2 molecules have occupied the. Till now we haven't said are those all 4 people fat or thin. Understood? It might be that all those 4 people are very, very fat. But they gel very good with each other. Okay, that is iron. Understood? It might be that those 2 molecules which are fighting with each other, they are very thin. And they also occupy this much. They also occupy the same pressure. If they are fighting each other, they will occupy the same. They will feel the same pressure hoga na, as those 4 fat molecules. Understood? So what you're confused between is, if they are fat, the volume of each molecule is heavier, right? And if they are thin, the volume of each molecule is smaller, but still the volume occupied as a whole is same. Understood? Okay. Now अब सोचो. अच्छा, अब लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि इफ वॉल्यूम, एक बात बताओ, वॉल्यूम को क्या डिफाइन किया था कि वॉल्यूम अवेलेबल टू रोम अराउंड. पहले हमने आइडियल गैस अज्यूम किया. आइडियल गैस का वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, आइडियल गैस में क्या असम्पशन था कि and they don't have any significant volume of each other. So if I say that some ideal gas has 22.4 liter, okay, then that ideal gas has 22.4 liter to roam around, right? But if it was a real gas, does it have more space to roam around or less space to roam around? Less space to roam around, right? Right. It has a volume of its own. It has, so a real gas has volume of its own. A real gas has volume of its own. A real gas has some finite volume of its own. If you want to be more clear, write next line. An ideal gas have 0 volume of its own.
Ideal gas has zero volume of its own. आइडियल गैस का assumption है वो, आइडियल गैस पूरा assumption पे है, ठीक है। तो रियल गैस हैज वॉल्यूम ऑफ इट्स ओन, देयरफॉर द वॉल्यूम अवेलेबल, क्या था कहां पर करो, the volume available to gas molecules in real gas is lesser, okay, is lesser. ठीक है, therefore पहले हमने लिखा था, रुको, हमने लिखा था PV इक्वल टू nRT में P को लिखा था P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, P प्लस समथिंग, तो वॉल्यूम में होता V माइनस NB, ओके। The volume available is lesser, so therefore there is a minus term there, and then it is nRT. This is called, right, this is real gas equation. Real gas equation. ठीक है, understood? This is real gas equation. B is something, N क्या होता है, ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा B क्या होता है, ठीक, अभी बाद में बताता हूँ। B का कुछ होता है 4/3, गुड क्वेश्चन। इस इक्वेशन में ऊपर देखो, स्क्रीन देखो, ये V क्या है जो डॉट लगाया, आइडियल है ना, आइडियल है ना। ये क्या, ये होना चाहिए वॉल्यूम अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल्स, ये इक्वेशन में आना चाहिए। तुम क्या कभी जाके एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना। तुम क्या निकाल सकते हो? हाँ, तो तुम देखो ध्यान से सोचना, तुम प्रेशर में क्या निकाल रहे थे, एक्चुअल प्रेशर या प्रेशर व्हिच शुड हैव बीन, एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड कर रहे थे, क्या इजी है, एक्चुअल प्रेशर, राइट। और यहाँ पे तुमको वो डालना है व्हाट इट शुड बी, राइट, इसलिए तुमने P प्लस किया। जब तुम वॉल्यूम निकाल रहे हो तो तुम वॉल्यूम किसका निकाल, आइडियल निकाल रहे हो, रियल निकाल रहे हो, आइडियल निकाल रहे हो, रियल तो निकाल ही नहीं सकते। वो गैस का कितना 8.5 ml, तुमको कौन बताएगा कि 3 एंगस्ट्रॉम है उसका डायमीटर, कोई नहीं बताएगा ना, राइट। तुमको तो जितना कंटेनर दिख रहा है उसी का वॉल्यूम निकालोगे, तुम वॉल्यूम कौन से निकाल रहे हो, आइडियल निकाल रहे हो। समझ में आया? देखो सुनो, आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर वो होता है जो प्रेशर शुड बी एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। एक मिनट, ये प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स शुड बी, ठीक, ये वॉल्यूम, द वॉल्यूम विच शुड बी अवेलेबल टू द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आइडियल गैस में ये वॉल्यूम पूरी वॉल्यूम थी जो पूरी मिली थी, राइट। रियल गैस में ये वॉल्यूम कम होगी, इसलिए यहाँ क्या डालेंगे, V माइनस NB, अंडरस्टूड। अब डाउट बोलो। फर्स्ट टर्म P plus A whatever. हाँ, So P is P of real. ये वाला P, Yeah. It's P of real. Yes. Right. Something like you're converting to P of ideal. yes, correct, In the second term, हाँ, you're finding P of ideal, yeah, but converting into something like P of V of volume occupied available for real gas. for real gas, yeah, yes, it doesn't. Okay, इसमें you can't understand, I think it's difficult to understand by real ideal. It's better to understand by what is the definition. In PV equal to nRT, P is the pressure which is Applied by the gas feels on the walls, wall. and V is the, So and V is the volume available to know because. yes, now it makes sense, right? No. कैसे? The second equation. अच्छा, हाँ, तुम ये नहीं समझ रहे हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तुम प्रेशर नापने जाते हो तो तुम
निकालते हो कि क्या प्रेशर एक्चुअली आ रहा है, तुम कम प्रेशर नापते हो, यू आर मेजरिंग अ लेसर प्रेशर देन द एक्चुअल प्रेशर, राइट? Therefore you're adding there. Therefore you're adding there for the actual pressure which should have been. Okay. And when you're finding volume, the volume which you find is more than what is the actual volume of the available to roam When you around. mean actual, you mean for When I say actual, I mean volume available to roam around, volume available to gas molecules to roam around. That I need to find. That I want to put in this equation. Okay. okay, this time. Now when I find the volume of the container, which is this volume, ये देखो ये volume of container है, ये important है, ये container का volume है. Ideal gas में मैं सीधे सीधे यही डाल देता हूँ. Directly you put volume of container. Real gas में the volume available to room is not the volume of the container. It is slightly lesser than volume of container. Yes. Therefore it is V minus M. Now it is clear, no? Now in the first term, In the first equation. the second equation first term. Okay, second equation first term. P. P. Now that P separate, Yeah. and that is like actual. That is not the pressure with which the gas molecules should have been hitting the container. This pressure is the molecules, is the pressure. Then you can say P is the actual molecule, actual volume available for the. ये नीचे वाला भी क्या है, फिर से बोलना. When you're saying P plus A whatever हाँ. is the actual, the pressure that should have been. Yeah. I will say the volume of the container, the volume that should have been. For the molecule. That way also it makes sense, no? नहीं आया कुछ. Either I'm not getting your doubt. So I feel one of the term is for real, one of the term is for actual. For